हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स चैप्टर से क्वेश्चन फॉर नीट चौका नंबर 9 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन है, उसके बाद उनके सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द डायोड्स आर फॉरवर्ड बायस्ड? All, A and B, B and D, B, C and D. Question number 2. The applied input AC power of 2.5 wave rectifier is 100 watt. The DC output power obtained is 40 watt. The rectification efficiency and power efficiency are respectively 40% and 40%, 80% and 80%, 40% and 80%, 80% and 40%. Question number 3. In an NPN transistor circuit, the collector current is 100 milliampere. If only 90% of emitter electrons reach the collector, what is the emitter current? 9 milliampere, 100 milliampere, 11.1 milliampere, 1 milliampere. Question number 4. A 10 volt Zener diode along with a series resistance is connected across 40 volt supply. Calculate the minimum value of the resistance R required if the maximum Zener current is 50 milliampere. 800 ohm, 400 ohm, 600 ohm, 500 ohm. Now solution. Question number 1. Which of the diode are forward biased? All, A and B, B and C, B and D, A, B, C and D. तो डायोड है, इसका सिंबल this is P side and N side. If P side is at higher potential with respect to N side, then diode is forward biased. अगर इसका उल्टा होगा तो रिवर्स बायस्ड। अगर P साइड हायर पोटेंशियल पर है विद कंपेरेटिव टू N साइड, द डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड। और अगर P साइड लोअर पोटेंशियल पर है विद रेस्पेक्ट टू N साइड, देन दिस इज रिवर्स बायस्ड। अब A को, दिस इज P साइड एंड दिस इज N साइड, ये अर्थ से अर्थिंग है तो ये 0 वोल्ट, तो यहाँ पर ये P साइड इज एट 0 वोल्ट, N साइड इज +5 वोल्ट, दिस इज रिवर्स बायस्ड क्योंकि N साइड का पोटेंशियल अधिक है, रिवर्स बायस्ड। B को, B पर दिस इज P साइड, N साइड, P साइड इज एट 10 वोल्ट और N साइड इज +5 वोल्ट। दिस इज क्योंकि P साइड इज एट हायर पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू N साइड, तो ये है फॉरवर्ड बायस्ड। C, ये अर्थिंग है, 0 पोटेंशियल पर है, दिस इज P साइड, N साइड, P साइड इज एट -10 वोल्ट और N साइड 0 वोल्ट, तो N साइड हायर पोटेंशियल पर है इन कंपेरिजन ऑफ P, दिस इज रिवर्स बायस्ड।
D, this is at 0. P side or N side, P side is at 0 potential, N side is minus 10 volt. So N side is at lower potential, this is forward biased. Forward bias, B and D are forward biased. C is correct option. Question number 2. The applied input AC power to a half wave rectifier is 100 watt. The DC output power obtained is 40 watt. The rectification efficiency and power efficiency are respectively 40%, 40%, 80%, 80%, 40%, 80%, 80%, 40%. सबसे पहले रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी, रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी ये होता है डीसी आउटपुट, पावर आउटपुट, एसी पावर इनपुट, डीसी पावर आउटपुट, एसी पावर इनपुट into 100. DC power output is 40 watt and input is AC input is 100 watt. 40 by 100 into 100% is equal to 40%. जो रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी है वो होगी 40%. पावर एफिशिएंसी AC DC पावर आउटपुट, DC पावर आउटपुट, AC पावर input for half cycle into 100. DC पावर आउटपुट इज 40. फुल साइकिल के लिए जो इनपुट दिया है वो 100, तो हाफ साइकिल के लिए 100 by 2 into 100. 4t into 2 by 100 into 100 is equal to 80%. तो 40% रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी और पावर एफिशिएंसी 80%. C is correct option. Question number 3. In an PN transistor circuit, the collector current is 10 milliampere. If only 90% of emitter electron reach the collector, what is the emitter current? 9 milliampere, 10 milliampere, 11.1 milliampere, 1 milliampere. जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एमीटर से कलेक्टर एंड बेस टू बेस, अगर 100 एमीटर इलेक्ट्रॉन है तो 90% रीच एट 90% और 90 टू कलेक्टर करंट और बेस पर 100 minus 90 10. 10% बेस पर और 90% reach collector. Collector current due to these electrons is 10 milliampere. So for 90% collector current is 10 or for 100% electron moving from emitter
that will be the emitter current. Collector current divided by emitter current into 100 percentage of electron on collector. 10 milliampere divided by emitter current into 100 is equal to 90. Emitter current is equal to 90 in 10 into 10 into 100 by 90 milliampere. 100 by 9 milliampere, 11.1 milliampere. जो एमीटर करंट होगी वो होगा 11.1 milliampere. C is correct option. Question number 4. A 10 volt Zener diode along with a series resistance is connected across a 40 volt supply. Calculate the minimum value of the resistance R required if the maximum Zener current is 50 milliampere. 100, 800 ohm, 400 ohm, 600 ohm, 50, 100 ohm. The maximum Zener current is 50 milliampere or 50 into 10 to the power minus 3 ampere. अगर करंट I मूव किया, this is I1, this is I2. Maximum current passes through the Zener, hence I1 is 0 or I is equal to I2. Potential drop across Zener diode 10 volt. यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है 10 वोल्ट, तो पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस across resistance R is 40 volt minus 10 volt, 30 volt. यहाँ पर ये पोटेंशियल ड्रॉप होगा 30 वोल्ट और करंट है 550 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. रेजिस्टेंस होगा V बाई R 30 वोल्ट बाई 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 और 30 इंटू 10 to the power 3 by 50, 30 into 1000 by 50, 20, 600 ohm.